question will be in front of you. What is the question now? Find the approximate value of the 4.01 the whole cube. And the subtopic of application of derivative chapter is what? That is what? Approximation. Exercise number 2.2. तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड. माय first step is always be you have to replace this number by x. So what is number here? The number is what? 4.01. तो उसके जगह पे मैं लिखने वाला हूँ x. I am going to replace the number by what? X. For 4.01 the whole cube है ना? That's why I will write what? X cube. Okay? And in the next step, I will say this is my function. This is my what? Function f of x. So what is the function here? X cube. Because number is what? 4.01 the whole cube. Now next कोई क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, अगर सर यहाँ पे 4.01 the whole square होता तो what I will write here? X square. Okay? अगर रूट होता तो यहाँ पे लिखता मैं रूट, जो भी होगा वो, but number should be replaced by what? X. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में. उसके बाद what? उसके बाद you have to replace. Students remember, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप, replace x by x plus h. मतलब हमें x के जगह पे लिखना है x plus h. ओके, तो यहाँ पे भी x के जगह पे क्या आएगा? x plus h. पर x plus h का क्या? क्यूब. Why? Because हमारे पास x क्यूब है, तो x के जगह पे x plus h आएगा. That's why x plus h the whole cube. This is what your second step. What is your third step? Third step में हम लोग करने वाले हैं, I am going to differentiate equation 1 with respect to x. तो इक्वेशन 1, तो व्हाट इज इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स? इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? योर f of x. एंड व्हाट इज इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड? व्हिच इज व्हाट? x cube. So what is the derivative of x cube? That you know, which is what? 3x cube. So what is what you mean by f of x का डेरिवेटिव? मतलब डैश. तो f dash of x का आंसर क्या आया? 3x square. This is what your first derivative. So this is equation number 3. उसके बाद हमें क्या करना? This is what standard steps. Don't worry. We will solve next question. That time also we are going to follow the same steps. That time you will get more confidence. Now what next? We are going to replace x by a. Put x equals to a in equations 1, 2 and what? 3. तो क्या बन जाएगा नया एक फॉर्मेट? इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड f of x, उसकी जगह पे f of a लिखूंगा, तो यहाँ पे आएगा a क्यूब. उसके बाद f of a plus h, f of what? A plus h, that is second equation. Second equation, तो यहाँ पे भी आएगा a plus h the whole cube. Next third equation, f dash of x, x की जगह पे लिखेंगे a, यहाँ पे भी क्या आएगा? 3a square. सर आपने ऐसा क्यों किया? x की जगह पे a क्यों लिखा? Because मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ अप्रोक्सीमेशन का. तो हमें थियरी नहीं पता, पर हमें लिखना होता है बाय थियरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन. जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी बड़ी थियरी लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्चुअली देखा नहीं है, बट इट इज व्हाट इन द फ्यूचर सिलेबस कि इसकी थियरी होती है, तो उसका थियरी का फॉर्मूला हमें याद रखना है. तो थियरी का फॉर्मूला इज व्हाट? f of a plus h is approximately equals to, ये फॉर्मूला याद रखना बिकॉज आगे के 2-3 समय हम लोग यूज करने वाले. तो f of a plus h, this is what sign of approximation. दो horizontal lines with 2 dots. So f of a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a. This is what formula number 4. Now what I will do in the next step, f of a plus h. What is the value of f of a plus h? तो आप देख सकते हो यहाँ पे है a plus h the whole cube is approximately equals to, what is f of a? f of a मेरा है a cube plus h into, what is f dash of a? f dash of a मेरा पास है 3a square. Okay, then I have to decide what a. अब a और h मुझे डिसाइड करना है, वो हमेशा आपको डिसाइड करना पड़ता है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में. तो a होता है, कैसे पता चलेगा a क्या होगा? तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स? 4.01. तो 4.01 के दो पार्ट डिसाइड करो, एक होगा 4, दूसरा क्या होगा? 0.01. तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए 4 plus 0.01 the whole cube is approximately equal to a cube. What is a? 4 का क्यूब प्लस h की वैल्यू कितनी लिखी? 0.01 multiply by 3 multiply by a is what? 4 का स्क्वायर
So now you have to find out what is 4 plus 0.01, 4.01, the whole cube. यही तो मुझे find out करना है. According to this particular calculation, we will get answer. What is 4 का cube? 64 plus. What is 4 for the 16? 16 3 the 48. 48 into 0.01, 0.48. So what is final answer? 64.48 is my final answer. Approximate value of 4.0. So according to using this particular concept of derivative and applying the formula, we can find what approximate value of any number. We will do the next some numericals in the next subtopics or sub questions. Please copy.